are going to start now lesson number 5, the fundamental unit of life. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. Animal cells generally small in size, shape is round, but in plant cell usually larger in size, shape is rectangular. Second point है, cell wall is absent, but in plant cells cell wall is present. Third, animal cells no chloroplast, but in plant cells contain chloroplast for photosynthesis. Fourth point है, animal cells lysosomes are present, but in plant cells lysosomes are absent. Fifth point, animal cells, an animal cell can often change its shape, but in plant cells it cannot change its shape. Sixth point है, an animal cell often possesses many small vacuoles, but in plant cell a mature plant cell contains a large central vacuole. थोड़ा सा समझते भी हैं. एनिमल सेल्स आमतौर पर छोटे साइज के होते हैं और उनकी शेप राउंड या इरेगुलर होती है, जबकि प्लांट सेल्स आमतौर पर बड़े साइज के होते हैं और उनकी शेप रेक्टेंगुलर होती है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है. एनिमल सेल में आमतौर पर कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. एक मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है जो कि सेल का 90% तक का स्पेस कवर कर सकता है. एनिमल सेल आमतौर पर अपनी शेप चेंज कर सकता है, प्लांट सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल साइज जनरली स्मॉल और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज. सेकंड पॉइंट है, सेलुलर नेचर. प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर as well as multicellular. Third, prokaryotic cells existence old cell type, but in eukaryotic cells may evolved from prokaryotes. Fourth point, prokaryotic cell nucleus absent, but in eukaryotic cell nucleus well developed. Fifth point, prokaryotic cell organelles absent, but in eukaryotic cells organelles, membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi apparatus present. Then sixth point, prokaryotic cell में ribosomes 70S type, but in eukaryotic cells ribosomes 80S type. Seventh point, structure simple, but in eukaryotic cells में more complex. Eighth point, prokaryotic cell duration of cell type very short, but in eukaryotic cell में comparatively long. The ninth point, prokaryotic cell में DNA nature circular, but in eukaryotic cell में linear. 10th point, prokaryotic cell found in bacteria, blue green algae, mycoplasma. Then eukaryotic cell में plants, animals, fungi. थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट सेल्स हैं जो बिलियन ईयर से इस धरती पर मौजूद हैं. इन सेल से ही बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बने. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में स्मॉल एंड सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें डीएनए फ्रीली फ्लोटिंग होता है. इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. ये एक ओपन यूनिट की तरह होते हैं जिनमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होते.
like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.